Hello everyone and welcome to Shifting Gears, and with me today I have the 2022 Kia Carens MPV. Kia की एक Carens एक 6-सीटर और 7-सीटर MPV है. Kia इसे एक RV यानी कि recreational vehicle कह रहे हैं, and this is their new family car for the Indian market. Kia की Carnival जो है, it sits at the upper end, at the premium end of the MPV segment, and this car आप कह सकते हो that it is going to ideally rival the Hyundai Alcazar because it is a sibling to the Alcazar. लेकिन ये गाड़ी पूरी तरह से नई बनाई गई है. It is all new, everything is new in this car. Exterior design पूरी तरह से अलग है, interior cabin पूरी तरह से अलग है, and this is not a badge engineered sibling. So in that way, thumbs up to Kia and Hyundai for sharing a lot of parts but giving us two separate cars with individual flavors and a distinct identity. इस वीडियो में हम इस Kia Carens के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं. मेरे साथ आज इस गाड़ी का 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल 7 स्पीड DCT लग्जरी प्लस वेरिएंट है, एंड टुडे आई हैव द कैप्टन सीट वेरिएंट. इस गाड़ी के इंटीरियर कैबिन के बारे में हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है, सो दैट यू गेट टू नो द स्पेस एंड द फीचर सेट दैट इज ऑन ऑफर. एक्सटीरियर डिजाइन के लिए हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है. वी हैव अ सेपरेट ड्राइव वीडियो फॉर द डीजल वेरिएंट ऑफ द किया Carens, और हमने इस गाड़ी के बैक सीट में बैठकर भी एक सफर तय किया है ताकि हम आपको ये बता सकें, इफ यू वांट टू बाय दिस कार फॉर योर फैमिली कार रिक्वायरमेंट्स, फॉर योर शॉफर ड्रिवन कार रिक्वायरमेंट्स, is it going to be good enough or not? So now let's talk in step-by-step fashion. Let me tell you everything that you need to know about this Kia Carens with this 1.4 liter turbo petrol motor. सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, क्योंकि आपको इस गाड़ी के साथ टोटल 3 इंजन ऑप्शंस मिल रहे हैं. Now what I have with me today is the Smartstream 1.4 liter turbo petrol engine. This motor produces 140 PS of power at 6000 RPM and 242 Newton meters of torque starting from 1500 RPM till 3200 RPM. आप इस Kia Carens का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर भी खरीद सकते हो, which produces 115 PS of power and 144 Newton meters of torque. Kia also is offering you a diesel engine option, which is a 1.5 liter CRDI unit, and that produces 115 PS of power and 250 Newton meters of torque starting from 1500 to 2750 RPM. The good thing is that this turbo petrol engine is much more powerful than the diesel engine option, but it is just as much in terms of the torque that is being offered to you. So you won't necessarily feel that this big MPV is lacking torque, because in big cars what you need more than power is torque, because you need that pulling power. अभी सभी इंजन ऑप्शंस के साथ आपको एक 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाएगा. विद दिस टर्बो पेट्रोल मोटर आपको एक 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है, एंड विथ द डीजल इंजन ऑप्शन आपको एक कन्वेंशनल 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर बॉक्स मिल जाता है. द 1.5 लीटर NA petrol engine doesn't get an automatic option. But all those are just numbers, right? The power output is the highest with this Kia Carens turbo petrol engine, and the torque output is also quite respectable, almost as much as the diesel variant. So I am coming to a standstill right now, and I am going to engage sport mode. इस गाड़ी में by the way आपको टोटल 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट. As you know, the names are self-explanatory. Eco mode में आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाएगा. Your throttle input is muted. Normal mode is the best of both worlds, and in sport mode आपको सबसे बेहतर पावर और टॉर्क आउटपुट मिल जाएगा, so that you can sprint hard with this big MPV, with this big RV, so that it doesn't feel slow and sluggish. जब आप स्पोर्ट मोड से इको मोड में स्विच करते हो, आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो काफी चेंज हो जाता है. You will notice it very easily. So if you have a steady right foot in sport mode, as soon as you switch to eco, you know, you will feel that the throttle input has muted, and likewise vice versa. अगर आप eco mode से sport mode पे इस गाड़ी को engage कर लोगे, this car will very quickly pick up pace. So right now I am at a standstill. मैंने engage कर रखा है इस गाड़ी का sport mode. I am driving it in standard D mode. मैंने Tiptronic mode
एंगेज नहीं किया है एंड आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू मेक यूज ऑफ द पैडल शिफ्ट्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील. इस गाड़ी में बाय द वे आपको कोई ऑटो होल्ड फंक्शनैलिटी भी नहीं मिलती है. सो नाउ इन 3, 2, 1 फुल किक डाउन. लिसन टू द इंजन गाइज. Already over 100 kilometers per hour, and for a 6-seater, 7-seater MPV, this Kia Carens is quite a fast car. I'm going to sprint one more time. I'm going to pull over to the shoulder so that you can gauge the performance. Still in standard D mode and not making use of the gears manually. In 3, 2, 1 full kick down. Very nicely pulling. काफी अच्छा acceleration है. Rev still 6000 RPM. Picking up pace very well, and I'm at serious triple-digit speeds right now. And trust me, guys, when I say this big recreational vehicle, this big bulky MPV is not a slow cow at all. It is no slouch. It is going to excite you for sure. This time I am going to slow down. I mean, I'm going to come to a standstill and I am going to switch it in the Petrol functionality, but now I'm going to take manual controls over the gearbox. So let's check out how this engine sprints now when I do all that I want to do. So in 3, 2, 1 it's a dual clutch automatic. Gear shifting is fast. बिल्कुल भी gear shift jerks मुझे feel नहीं हो रहे हैं. And what an exciting big car. We always say exciting little car because you can just chuck it left, right and center, but this Kia Carens very very engaging. So even though आप एक family car खरीद रहे हो so that you have a people mover, a practical car, when you feel the need for speed, this Carens will surely reward you. Check this out one more time. अभी तक मैं पैडल शिफ्ट पे से गियर बॉक्स और इंजन को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आप इस गियर स्टिक पे से भी टिप्ट्रॉनिक फंक्शन का इस्तेमाल करके इंजन और गियर बॉक्स कंट्रोल कर सकते हो. लिसन टू द इंजन नाउ. Gear shifts are nice and quick, and the gearbox is really responsive for an MPV. और ये चीज आप जरूर अप्रिशिएट करोगे. The good thing is that the engine doesn't get too loud or coarse even at higher revs. In sport mode, the engine is revving up to 6000 RPM, और 6000 RPM पे अगर आप अपशिफ्ट करना भूल जाते हो, the onboard computer will take things in its own hand and it will upshift. So if you don't bounce on the rev limiter, अपशिफ्ट नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर आप पेडल प्रेस करके चला रहे हो इस गाड़ी को, if your throttle is pinned, the car will sense that you need more progression, you need more power build up, you need to pick up more speed, and it will upshift for you. And check this out. In third gear, you can be close to 100 kilometers per hour. In third gear, you can actually touch 110 kilometers per hour. And wow, what a fast car, what a fast and fantastic MPV, what a fun MPV. ये गाड़ी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है. Yes, it might not look very exciting on the outside. It looks very practical and some people might think कि ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा ही quirky नज़र आती है. It might not be the most beautiful car that you can buy when you want to spend close to $2 million on the road here in the Indian market. But nevertheless, from behind the wheel, especially in sport mode, good power on tap and good engine response. अभी मैं standard D mode में हूँ
and I am still in sport mode, by the way. At close to 70 kilometers per hour, the engine is in 5th gear. The engine RPM at 70 kilometers per hour is 2000, and as soon as I kick the pedal, instantly downshifts, and I am over 120 kilometers per hour already. Very good response, very good response. आज मैं सुबह से इस गाड़ी को लगभग 60 किलोमीटर के लिए चला चुका हूँ. The engine has been running for 2 hours 20 minutes. लगभग 40 से 50 मिनट तक एक जगह पे हमने इस इंजन को आइडल किया है when we were shooting the interior video. And still the mileage figure that I can see on the onboard computer is 10.8 kmpl. And right now जब हम हाईवे पे इस गाड़ी को चला रहे हैं, the mileage figure on the onboard computer is showing 12 kmpl, and this number is increasing with each passing kilometer. So I think अगर आप इस गाड़ी का लॉन्ग ट्रिप्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, and if you drive sensibly, ये जो Kia Carens है, I think it can easily deliver close to 15 to 16 kmpl with 3 to 4 people on board, and that is a respectable number for a car of this size with so much power and torque on tap and with a petrol motor. Right now I am driving this Kia Carens in eco mode. Eco mode में जब आप इस गाड़ी को चलाने वाले हो, you will have to be patient, because even if you tap the throttle pedal a little extra, गाड़ी जो है काफी प्रोग्रेसिवली मोमेंटम गेन करेगी ताकि आपको माइलेज अच्छा मिल सके. सेम थ्रॉटल इनपुट अगर आप स्पोर्ट मोड पे या नॉर्मल मोड पे दे देते हो, द Carens will be more eager to move forward and pick up pace. In eco mode, you will feel that the throttle is a little dull, but I think that is a good mode to drive this big car inside the city, so that you know your wallet is not hurt a lot, because petrol prices are not coming down anytime soon. Right now let me tell you the cruising speed and your RPM range. अभी मैं 80 किलोमीटर पर आवर पे इस गाड़ी को चला रहा हूँ. At 80, this Carens has engaged the 7th gear and it is moving forward at 1500 RPM. When I switch to 90 kilometers per hour, जब मैं cruise control 90 पे सेट कर देता हूँ, the engine RPM is 1700, and when I move to 100 kilometers per hour, the engine is at 1900 RPM. Very relaxed state of tune for a petrol engine. ये काफी जरूरी है. अगर आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे अंडर 2000 RPM क्रूज कर पाओगे, आपको यकीनन काफी बढ़िया माइलेज मिलने वाला है. The mileage figure is improving every 5 minutes and I am really liking it. This is a big car. This is a turbo petrol car, and it is going to keep you happy and satisfied in your ownership cycle. One fine detail which I want to share with you is that अगर आप eco mode पे भी इस गाड़ी को चला रहे हो, even if the gearbox is in standard D mode, you can still take manual control and you know downshift if you feel like. Listen to the engine right now. It is in 4th gear and at 100 kilometers per hour, but the cruise control has not disengaged. ये काफी rare है, because if you have set cruise control and if you play around with the gearbox, the cruise control usually gets disengaged, deactivated. But in this Kia Carens, ये गाड़ी जो है, it is still staying at 100. Right now it has moved back to the 7th gear, and check this out. Listen to the engine. I have dropped the gears to 4th gear, and slowly it will sense that you don't need to be in that gear, and then it will go back to the ideal gear. ये भी एक काफी स्मार्ट फीचर है. तो अगर समझिए आप किसी घाट रोड पे इस गाड़ी को चला रहे हो, if the road is nice and winding and if you can carry that extra bit of speed, if you think you are carrying a lot of load, you can downshift to a lower gear so that you know you get better power and torque output. You are more in the ideal rev range so that your momentum is not lost. And what a smart car. Not that you need to do that manually, क्योंकि आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो. अगर आपने क्रूज कंट्रोल सेट कर रखा है and if the engine will sense that it needs to drop a gear, it will do it. But paddle shifts also work in eco mode and in standard D mode and with cruise control. Wow. By the way, इस Kia Carens MPV के साथ आपको कोई adaptive cruise control functionality नहीं मिल रही है. You are not getting level 1 or level 2 ADAS functionality. इंजन और गियरबॉक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इंजन NVH काफी बढ़िया है. I am at 80 kilometers per hour right now. No engine noise inside the cabin. Wind noise जो है cabin में creep in नहीं कर रही है.
इंजन नॉइज कैबिन में तभी सुनाई देता है जब आप बहुत ज्यादा रेव करते हो इस इंजन को, बट दैट इज नॉट टू कोर्स और नथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू फील अनकंफर्टेबल. इट इज क्वाइट प्लीजिंग. अ पेट्रोल इंजन व्हेन यू रेव इट हार्ड, यू एक्चुअली लाइक इट, डोंट यू? ओवरऑल अभी जब हम इस गाड़ी को कंक्रीट पैच पे चला रहे हैं, टायर नॉइज जो है वो भी ज्यादा नहीं है, एंड दैट अगेन इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज काफी बार हम काफी सारी गाड़ियां इस रोड पे रिव्यू करते हैं, टेस्ट करते हैं, एंड द रोलिंग नॉइज, द टायर नॉइज इज आई गेस ऑन द बेयर मिनिमम साइड इनसाइड दिस कैबिन. सो ये गाड़ी आपको काफी समय तक आपके लंबे सफर में स्ट्रेस फ्री रखेगी, एंड सिंस यू आर स्ट्रेस फ्री यू विल बी एबल टू ड्राइव दिस कार फॉर अ लॉन्गर टाइम happily, comfortably, and all of your passengers will be comfortable on the inside. Now the next point that we should talk about is ride quality and dynamics. अब ये एक ऊंची गाड़ी है, this is an MPV, so जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत बॉडी रोल जरूर है, and when you know make sudden lane changes you will notice that body roll for sure. Check this out. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में सडनली लेन चेंज करते हो, यू विल डेफिनेटली फील दैट पिच एंड रोल फ्रॉम द रियर एंड ऑफ द कैबिन. सो ये जो आपको बॉडी रोल इस गाड़ी में फील हो रहा है, अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ द कार एंड देन ड्राइव इट अकॉर्डिंगली. दिस इज नॉट अ लो स्क्वाटिंग व्हीकल, सो यू कांट बी कॉर्नर कार्विंग इन दिस फैमिली 6-सीटर 7-सीटर Kia Carens. लेकिन फिर भी गाड़ी समझने में काफी आसान है और काफी प्रेडिक्टेबल है. When I am making these sudden lane changes, when I am giving these sharp turn inputs, स्टीयरिंग व्हील जो है काफी प्रेडिक्टेबल है, लाइट है, एंड देयर इज डिसेंट अमाउंट ऑफ सेंटर पुल बैक एज वेल. हाई स्पीड पे ज्यादा हेफ्ट नहीं है स्टीयरिंग व्हील पे. स्टीयरिंग व्हील एट ऑल टाइम्स लाइट रहता है, लेकिन रिस्पॉन्स के मामले में एज पर एमपीवी कार स्टैंडर्ड्स आई थिंक ये काम चलाने लायक है, एंड देयर इज नथिंग दैट यू विल कंप्लेन अबाउट. स्टीयरिंग व्हील का साइज अगर और थोड़ा बड़ा होता तो शायद आपको ये एक प्रॉपर बिग कार फील होती, बट आई थिंक दैट माइट बी जस्ट निट पिकिंग. इट फील्स वेरी कार लाइक फ्रॉम बिहाइंड द व्हील, और आपको इस गाड़ी को चलाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. सो यू कैन वेरी इजीली जिप अराउंड इनसाइड सिटी लिमिट्स इन दिस कार. आपको चलाते समय ऐसा फील नहीं होगा कि आपने एक बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीद ली है एंड इट इज जस्ट टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट. दिस कार इज एफर्टलेस इनसाइड द सिटी. 2.5 घंटे से मैं ये गाड़ी चला रहा हूं और मुझे कोई भी थकान महसूस नहीं हो रही है. दैट इज ऑल्सो थैंक्स टू द फैक्ट दैट दिस कार कम्स विद वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सो योर बैक इज गोइंग टू स्टे कूल व्हेन यू आर आउट ऑन योर लॉन्ग ड्राइव. ये एक 2 पेडल ड्राइव है, ये एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वेरिएंट है. आपको एक जनरस डेड पेडल मिल जाता है, पेडल प्लेसमेंट भी काफी अच्छी है, और काफी अच्छा फुट रूम भी आपको मिल जाता है टू स्टे कंफर्टेबल इन दिस कार. मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंचेस, एम्पल हेड रूम. मैं बैठा हूँ एट द लोएस्ट सीट हाइट, एंड आई कैन वेरी इजीली गेज द व्हीकल ओवरऑल. इस गाड़ी के साथ आपको कोई 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट नहीं मिलता है. यू डू गेट फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स विच इज गोइंग टू हेल्प यू drive this car safely and park this car safely. Rear camera जो है आप इसे manually भी activate कर सकते हो when on the move, so that is a feature if you think you need it. But otherwise, in terms of overall package, things are pretty good, things are pretty sorted. Ride quality की अगर बात करें तो suspension setup जो है वो काफी अच्छा है. I have driven it inside Mumbai traffic limits. बड़े से बड़े स्पीड ब्रेकर्स पे से हम इस गाड़ी को चला चुके हैं, कहीं पे भी अंडरबेली स्क्रैप नहीं हुई, एंड इट डज सोक अप द बम्प्स क्वाइट वेल. सस्पेंशन ट्यून जो है इट इज मोर कंफर्ट ओरिएंटेड. इट इज एन एमपीवी, तो ये एक अच्छी चीज है. आपको ज्यादा थर्ड्स फील नहीं होते हैं. ऑफ कोर्स इफ यू ड्राइव ओवर रियली बैड पैचेस आपको थोड़े झटके फील होंगे. दिस कार राइड्स ऑन 16 इंच rims by the way. These wheels are smaller in size compared to the Hyundai Alcazar, so थोड़ा बहुत राइड क्वालिटी में आपको फर्क जरूर फील होगा अगर आप इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर रहे हो. I think this Carens strikes the right balance and it is definitely a comfortable car to be inside. Hyundai की Alcazar जब एक 6 या 7 सीटर SUV के हिसाब से पोजीशन हो रही है, this Kia Carens is being positioned as an RV. We know that it is an MPV.
और इस गाड़ी में बाय द वे आपको कोई ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स नहीं मिल रहे हैं, सो यू डोंट गेट रफ रोड फ्रेंडली मोड्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो जस्ट प्योर ड्राइव मोड्स एंड दैट इज इट. सो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन दैट दिस इज अ रोड बायस्ड व्हीकल. थोड़े बहुत SUV ट्रेड्स आपको जरूर नजर आएंगे इस गाड़ी के साथ. This car is also making use of MRF Wanderer tires, which you also see on a lot of SUVs here in the Indian market. But this is a road-focused family car, not an SUV. So don't go off-roading in this car. The next point to talk about is the braking performance. Now, I have been driving it in a sedate fashion. I am respecting the purpose of the car. ये एक family car है. This is not a fast and the furious kind of a car. But I have noticed that the braking could have been a little more sharper. It feels a little slow. The pedal feel is decent. Progressive pedal feel तो आपको ज़रूर मिलता है. But I think that the bite could have been a little sharper. Now that might be down to the fact that I am driving an MPV after a really long time. So maybe I am not used to it. अगर किसी MPV में आप ज़्यादा sharp brake bite दे दोगे, it will result in quite some nosedive and all the passengers might be uncomfortable and unsettled. Braking power जो है, overall जो stopping power है, वो खराब नहीं है. It is confidence inspiring and you can bring the car back in your control easily. Safety features की बात करें तो इस Kia Carens के साथ आपको 6 airbags standard मिलने वाले हैं on all variants. You are going to get ESC, VSM, HAC, DBC, ABS, BAS, all-wheel disc brakes, TPMS, rear parking sensors, front parking sensors and what-not. So in terms of safety kit, this car is pretty loaded. और आपको इस गाड़ी को चलाते समय ज़्यादा डर नहीं लगेगा because you will have that reassurance that you have active and passive safety features which are in abundance in this family car. मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक मारुति सुजुकी अर्टिगा है या एक XL6 है और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो to a larger car, I think this Kia Carens will feel like a proper upgrade. This is a proper family car, very spacious, काफ़ी versatile space management है इस गाड़ी की, तो interior review video ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. And if you are an Ertiga owner or if you are any other hatchback or a sedan owner who wants a big family car, a people mover, ये गाड़ी आपको ज़रूर खुश रखेगी. So guys, आप मुझे comments में ज़रूर बताइए क्या है आपकी राय इस Kia Carens के बारे में. मुझे ये गाड़ी काफ़ी पसंद आई. I think it is not a boring car at all. Yes, it is an MPV, but the engine, this 1.4 liter turbo petrol motor, very punchy, very exciting, and it has more power than the diesel engine and it has almost similar torque output. So it is the best of both worlds. It will pick up pace fast and it will also have that pulling power. Say for example, अगर आप घाट रोड्स पे इस गाड़ी को चला रहे हो, this 7-speed dual clutch automatic gearbox, fast shifting, jerky बिल्कुल भी नहीं है. ये सभी चीजें आपको आपके ओनरशिप साइकिल में जरूर खुश रखने वाली हैं. So if you have any other queries about this Kia Carens, do ask me in the comments below and I will try my best to help you out. See you soon. Do check out the other videos that we have uploaded for this car. Always guys, drive safe and always wear your seat belts.